अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज इसमें आपको CSS सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले नए आने वाले दोस्तों को गुजारिश है, गुलबाज टेक इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। प्ले स्टोर से अपने यहाँ पे आ जाते हैं जी। हमारे पास CSS सिंटैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करूँगा आज इस वीडियो में। आपको फुल डिटेल के साथ जो है ना यहाँ पे बताऊँगा। तो अब वीडियो का आपने जो है ना लास्ट तक देखना है ताकि आप जो है ना यहाँ पे फुल आपको प्रॉपर जो है ना इसकी समझ आ सके। तो यहाँ पे आ चुके जी। CSS comprises of style rules that are interpreted by the browser and then applied to the corresponding elements in your document. A style rule is made of three parts. तो यहाँ पे सिलेक्टर आ जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्टर इज एन tag at which a style will be applied. This cloud be any tags like property। यहाँ पे आ जाएगा property is a type of attribute of tag. Put simply, all the attributes are converted into CSS properties. They cloud be color border etc. Value यहाँ पे आ जाए, वैल्यू यहाँ पे आ जाती है आपके पास। वैल्यू आर असाइन टू properties. फॉर एग्जाम्पल, कलर प्रॉपर्टी कैन हैव वैल्यू एट द रेड F1 etc. आ जाता है यहाँ पे। उसके अलावा पे आ चुके जी हमारे पास यू कैन पुट CSS स्टाइल रूल सिंटैक्स आर अस फॉलोज। यहाँ पे आ जाते हैं जी। उसके अलावा पे आ चुके एग्जाम्पल, यू कैन डिफाइन अ टेबल बॉर्डर अस फॉलोज। यहाँ पे टेबल बॉर्डर, यहाँ पे हायर टेबल इज़ अ सेलेक्टर एंड बॉर्डर इज़ अ प्रॉपर्टी एंड गिवन वैल्यू 1px solid C00 is the value of that property. You can define selectors in various simply ways based on your comfort. Let me put these selectors one by one. The type selector, यहाँ पे this is the same selector we have seen above. Again one more example to give a color to all level 1 headings. यहाँ पे आ जाते द यूनिवर्सल सेलेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के बारे में आपको बता रहे हैं। रेदर देन सेलेक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, द यूनिवर्सल सेलेक्टर क्वाइट simply match the name of any elements type. This rules renders the content of every elements in our documents is black. The different selectors, suppose you want to element as give in the following example. Style rule will be applied to elements only when it lies inside tag। यहाँ पे the classes selector आ जाते हैं। You can define style rules based on the class attribute of the elements. All the elements having that class will be formatted according to the defined rule. This rule renders the content is black for every elements with class attribute set to black. In our document you can make it a bit more particular. For example, तो यहाँ पे this rule renders the content in black for only elements with class attribute set to black. You can apply more than one class selectors to given elements. Consider the following example. Zakar. The ID selector, you can define style rules based the ID attribute of the elements. All elements having that ID will be formatted according to the defined rule. This rule rendered the content is black for every elements with ID attribute set to black. In our document you can make it a bit more particular. फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल सारी लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सारी रेड कर लेनी है। तो अभी इसके जो है ना आपको यहाँ पे फोर्थ पार्ट में जो है ना मिलते हैं।